Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome once again to my channel. My name is Muhammad Atiq Anwar and you're watching my channel Muhammad Atiq Anwar and Education for Us All. So once again you find me in our kitchen where we are going to make another healthy drink. So I'm starting off with these because they are very quick to make, and of course I need what can we say, videos and video time, and we make these almost every day, so I'm going to film them before we consume them. So as you can see, we have blueberries and we have beetroot. Okay, so very what can we say, good fruits and veg for blood pressure patients and generally as antioxidants. नाज़रीन खुश आमदीद, मेरा नाम है मोहम्मद अतीक अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद अतीक अनवर एंड एजुकेशन फॉर अस ऑल। आज एक बार फिर हम अपने किचन में हैं। तो आज का जो ड्रिंक हेल्थी ड्रिंक होगा वो है, उसमें हो गए ब्लूबेरीज़ और बीटरूट। मुझे ब्लूबेरीज़ का उर्दू नहीं पता, मैंने रिसर्च भी किया तो कोई कुछ ख़ास नहीं दिखाया गया। हम तो इसे नीली बेरीज ही कहते हैं, और मेरी मामा पटवारी में थे, नीला बैर कहते थे, मगर यहाँ बरतानिया में ईज़िली मिल जाते हैं। आई थिंक पाकिस्तान में भी ऐसे ब्लूबेरीज़। ओके, सो इसके साथ मैं पानी डालूँगा, मगर अगर आप दूध स्पेशली आलमंड ऑयल इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ वाटर गाइस, but other things, if you are, what can we say, not resilient to them, not allergic, like almond milk, then they are just as useful. So I'm going to put them in the blender and then blend them, and then you give you the benefits of them. नाज़रीन, मैं अब ब्लेंडर में डालूँगा तो 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, तो फिर इसके फ़ायदे आपको बताएंगे। जैसा मैंने कहा, 1 गिलास, इससे ज़्यादा करेंगे तो वाटरी हो जाएगा। 1 गिलास में जैसा देख सकते हैं ये सिलेंडर, इसमें हम 2 गिलास ईज़िली इस साइज़ जैसे बन जाएंगे। ओके जी, लेट्स गेट द थिंग्स इनटू द blender and blend. Okay, so what we have there is a big handful of beetroot and a large big blueberries and a large beetroot. नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ब्लूबेरीज है और एक चुकंदर लार्ज वन है, इसमें हम डालेंगे पानी। Okay, let's get that blended and show you the finished product. It always has problems starting because the what I've done is I don't know whether you can see, but the beetroot is at the bottom, so I'm going to have to do it with both hands. So I'm just going to blend it with both hands. Okay, so it requires more effort than I thought. So there we have the blended product. I'm going to pour it into the glass and show you show you the benefits of this mixture. नाज़रीन, ये है जी हमारा प्रोडक्ट। अब हम इसे ग्लास में डालेंगे तो इसके फ़ायदे आपको बताएंगे। So there is our finished product, viewers. Nice and simple. I like it simply, but you can add other things to it. For example, you could garnish it with almonds and pistachios. So sort of going on to the benefits. Beetroot, of course, is good source of fibre. What else have I written? Folate, iron, and vitamin C and manganese. Okay. And blueberries are, of course, very high what we call antioxidants, and the whole mixture is going to improve your digestive system and energy levels and iron boost. So we used to have this, or we do have this at during Ramzan.
And what else can we say? It's refreshing at all times, really, but if you have it first thing in the morning, especially in Ramzan, and also of course iftar, it's very very refreshing. Okay, नाजरीन, ये है जी हमारा फाइनल प्रोडक्ट. तो ये जो बीटरूट और ब्लूबेरीज का मिक्सचर है, ये क्या कहें, इसमें फाइबर है, इसमें फोलाइट है, इसमें आयरन है, विटामिन सी है, और ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मैदा इम्प्रूव करेगा, और वैसे ही एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव करेगा. ओके, सो आप अगर इसे गार्निश करना चाहते हैं तो इस पे पीछे हुए बादाम और पिस्ता और भी एनर्जी देगा. Okay, thank you guys. I hope you're going to try it out. Believe me, this is really, really healthy, and again, gives you that energy boost in the morning. Thank you for watching. Please keep watching. Please tell all your friends about the channel. Until the next time, look after yourselves. Goodbye. Nazreen, बहुत बहुत शुक्रिया. ब्रायमान बानी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.